Good morning, students. Today talk to you about the Spirochaetes. Spirochaetes is a gram-negative bacteria because it has the thin glycopeptide layer and it is twisted spirally along the long axis. ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଣ୍ଟରର ଚାରିପଟେ ସାର୍କଲ ହେଇକି ଗୁଡ଼େଇକି ସାର୍କଲ ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସେମାନଙ୍କର ସେଣ୍ଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଇନକ୍ରିଜ୍ ବା ଡିକ୍ରିଜ୍ ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, ଏବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ସେମାନେ ସାର୍କଲ ସେଣ୍ଟର ଚାରିପଟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଟ୍ୱିଷ୍ଟେଡ୍ ସ୍ପାଇରାଲି ହୋଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲଙ୍ଗ ଆକ୍ସିସ୍ରେ। ଏବଂ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପୋଲାର ଫ୍ଲାଜେଲା ଦ୍ୱାରା ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ସୋ ଦେ ଆର୍ ମୋଟାଇଲ୍ ବାଇ ପୋଲାର ଫ୍ଲାଜେଲା। ପୋଲାର ଫ୍ଲାଜେଲା ହେଉଛି କ'ଣ ତାଙ୍କର ସେଲ୍ର ଗୋଟିଏ ବା ବହୁତ ପୋଲରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବା ଅନେକ ଫ୍ଲାଜେଲା ରହିଥାନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିପାରିଥାନ୍ତି। तो स्पाइरोचेट्स भितर जाउछि कोन ना ट्रिप्टोनेमा पालिडियम। पालिडियम also a gram negative bacteria because it has the thin glycopeptide layer and it is very long and very slender or thin, and these are the helically coiled because it consists of one or two spiral tons. Okay, and it is also screw shaped because due to the pointed at the spiral pieces, so that these are the corkscrew shaped and have the tapering end because it becomes smaller towards the end. Okay, so ट्रिपोनेमा पालिडियम हूँ ग्राम नेगेटिव बैक्टेरिया कहीं थिक ग्लाइकोपेप्टाइड लेयर रही। यह बहुत लंबा अटे, थिन अटे, जोटा स्लेंडर आम कहे। तापर हेलिकली कॉइल्ड से माने गोटे किंबा दुई थर स्पाइरल टर्न्स भले करिथांती एवं से माने कॉर्क स्क्रू शेप्ड अटंती कहीं से माने स्पाइरल पीसेस रे पॉइंटेड होइक रहिथांती एवं से माने जेहेतु तांकर शेष भाग आड़ को धीरे धीरे स्मॉल हो जाइथांती तेणु से गुडकर एंडटा टापरिंग एंड रही थाए। ओके, यार साइज होची 5 to 15 into 0.2 micrometer and these are the actively motile because their movement occurs through by the own accord which help for the movement of the cell. So से माने निज निजर इच्छा अनुसार गति करि परिथांती मोटाइल होई परिथांती से सेल को गति करिथांती by through by the expanding energy. सो एनर्जी खर्च करके निज निज सेल को गति कर साहाଯ୍य करते मोटाइल अटंती एवं नॉन स्पोरिंग मानकर स्पोर न थाए कहीं स्पोर्ट आमर सेल को डिफेंड करिबारे साहाଯ୍य करे। ओके, एवं दे आर रेजिस्टेंट टू द हीट स्पोर्स एंड दे स्पोर्स आल्सो हेल्प फॉर द रिप्रोडक्शन। स्पोर गुड़ा कम गुड़ाक सब थाए किंतु टाप्टन पालिडियम रे स्पोर न थाए तेणु से डिफेंड कर स्पोर नथिबार डिफेंड सहजरे करिपारंतिनी एवं नॉन कैप्सुलेटेड से कैप्सूल मध्य न थाए, आउटर कवरिंग लेयर मध्य न थाए। ओके, when you see in the dark field microscopy it will seen that they are moved around the axis in the forward and backward motions. Then when you see in the dark field microscopy, so in the dark field microscopy here what happen in the dark field microscopy, in the dark field microscopy the light reaches to the specimen from an angle with the help of opaque disc. Okay, here what happen गोटे ओपाइक डिस्क मध्यम कौन हुए ना लाइट कौन करे ना स्पेसिमेन को गोटे आंगेल रे आसिक पहुँची थाए। ओके, एथरे कौन हुए ना डार्क बैकग्राउंड एग्नेस्ट रे कौन करे स्पेसिमेन्सटा ब्राइट पूरा लाइट अप देखा जाए बा ब्राइट देखा जाए है। डार्क बैकग्राउंड एग्नेस्ट रे स्पेसिमेनटा ब्राइट देखा जाए। ओके, जहाँफल कि आम कौन करूँ स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म भल भाव में देखी पारि था। ओके, साउथ रे कह डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी रे कौन हुए in the dark field microscopy the light reaches at various angle on the specimen with the help of an opaque disc. Here specimens appears is very bright
against the dark background. For that reasons we easily visualize the organisms. तो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन कौन हुए लाइट अपाक्यू डिस्क माध्यम डिफरेंट एंगल स्पेसिमेन उपर पड़ी था जहाँफल कि डार्क बैकग्राउंड एग्नेस्ट रे स्पेसिमेन गुड़ाक भल भाव ब्राइट देखा जाती जहाँफल कि आम स्पेसिमेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म गुड़िक भल भाव देखिपारि था ओके आम इंडिया इंक द्वारा नेगेटिव स्टेनिंग माध्यम आपको देखिपर एमाने दे आर नॉट cultivate or growth and development in the artificial media okay so some artificial media रे भल भाव ग्रोथ कर नथांती and these are the inactivated by the heat in that temperature like the 41 to 40 degree centigrade 42 centigrade within 1 hour within 1 hour with the temperature 41 to 42 degree centigrade heat the organism becomes inactivated okay and they are killed at 0 to 4 degree centigrade within the 1 to 3 days so 1 to 3 days रे 0 to 4 degree centigrade माने किल हो जाथांदी एवं गोटे घंटा मध्य 41 रु 42 सेंटीग्रेड मध्य माने ऑर्गेनिज्म गुडा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनएक्टिवेटेड हो जाथांदी देन कम टू द पैथोजेनेसिटी ओके Tapetum pallidum causes a disease like the syphilis. So syphilis disease create करिबारे Tapetum pallidum एक causative agent होता है syphilis हो जो गोटे sexual transmitted disease जहाँ जोटा कि Tapetum Tapetum pallidum माध्यम रे होता है ओके so sexual transmitted disease Tapetum pallidum माध्यम रे होता है it is occurs in the two stage acquired syphilis and the congenital syphilis so first see that acquired syphilis occurs through by the sexual contact and it is undergoes the three stages like the first stage second stage and tertiary stage in the primary stage second stage tertiary stage in the primary stage what happen when in the entering part of the body through by the microorganism that part becomes ulcer and becomes indurated and that part becomes the painless so entry part of the microorganism on the skin of the body part of the human body that part becomes ulcer indurated and painless okay so that part becomes the hardness with by the mucus okay because there is a inflammation process going on as infection and inflammation process going on that part becomes the hardness with the and will deposit of the mucus and that part becomes ulcer and but not patient not feel the pain okay so it will be commonly in the genital area so primary stage रे कौन हुए ना जो पार्ट रे बॉडी रो एंट्री करता है स्पाइरोचेट्स से पार्ट टी कौन हुए ना मिकोस रे भर्ती हो जाए एवं से पार्ट हार्ड हो जाए एवं सेठी अल्सर देखा जाए एवं से पार्ट कौन हुए ना पार्ट रे पेन फील हुए नहीं ओके and the lesion will form in the 10 to 90 days when spirochete into the body the infection will be appeared then inflammation process going on then lesion will be formed into 10 to 19 days okay and that cancer will be healed in 10 to 40 days then come to the secondary stage will be going on 2 to 6 months after the primary lesion heal okay primary lesion heal पर 2 to 6 months सेकेंड स्टेज देखा जाए था एबे एथरे कौन हुए ना इन द सेकेंड स्टेज पॉपुलर स्किन रैशेस विल बी अपीयर एंड mucous patches will be seen in the mouth and condylomata at the mucous junction of the lip and anus तो सेकेंड स्टेज कौन हुए after healing of the primary lesions within 2 to 6 months secondary stage will be occur and in this stage the skin rashes will be seen skin rashes देखा जाता है
and mucous patches mouth रे देखा जाए, vagina देखा जाए एवं मिकोक्यूटेनस जंक्शन लिप्स एनस मध्य जो मिकोक्यूटेनस जंक्शन थाए सेठर मध्य देखा जाए थाए. ओके, यह कहीं होता है बिकॉज बैक्टीरिया विल बी मल्टीप्लाई एंड इट विल बी scattered in the blood, so that that will be automatically causes the disease. Then come to the tertiary stage. In the tertiary stage, when the patient will be untreated, the example the 50%, if the 50 when the 50% of the patient will be untreated case after several years. So टर्चरी स्टेज रे कौन हुए ना जिते जो पेसेंट अनट्रिटेड मैं ट्रिटेड हो पारती ना से समय ये टर्चरी स्टेज आसी थाए. एग्जांपल को लीजन गुड़ाक साधारणतः ट्रिट ठीक हो पार न थाए. सो एग्जांपल कार्डियोवास्कुलर लीजन, इन द कार्डियोवास्कुलर लीजन ब्लड वेसल्स एंड द हार्ट will undergo, and the chronic granulomata, in the chronic granulomata region it is also undergo the tertiary stage. In chronic granulomata also it is a disease. Okay, it is inherited disease where the white blood cells will not function properly, because here the white blood cells always white blood cells helps for the person to fight the infection, but in the chronic granulomata stage the white blood cells do not function properly, so it is a disease, inherited disease. Okay, so when it is these lesions is also not healed or is not treated, so the patient goes the tertiary stage. In the many vascular manifestations, it is consists of the blood vessels, brain also, with that lesions will be not healed properly, so it is also patient also goes in the tertiary stage. In the congenital syphilis, will you see that here the disease, that sexual transmitted disease will be transferred from the fetus, mother to fetus through the placenta. Uterus रे कौन हुए in uterus रे कौन हुए मदर रू fetus को placenta माध्यम रे syphilis disease ट्रांसफर होता है. बेले बेले कौन हुए ना fetusटा डेथ हो जाता है ये congenital syphilis जो कि मिसक्यारेज होता है कि डेलीवरी पूर्व fetusटा डेथ हो जाता है. ओके, when patient and doctor close contact with the patient in the hospital in the occupational stage, also congenital syphilis occurs to the healthy persons, also doctor nurses जो पेशेंट को टच करती पेशेंट को सिपिल्स होता है ऑक्यूपेशनल क्षेत्र में congenital syphilis डॉक्टर नर्स को होबार संभावना बहुत थाए. ओके, देन कम टू द लैबोरेटरी डायग्नोसिस. In the laboratory diagnosis, first we collect the specimens, that specimens we collected from the patient, the specimens like the tissue fluid and exudates ଭିତରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପସ୍ ବା ଯେଉଁ ଡେଥ୍ ଟିସ୍ୟୁ ଇତ୍ୟାଦି को କଲେକ୍ସନ୍ କରାଯାଇଥାଏ. ओके, प्राइमरी लीजन रे साधारणतः टिश्यू फ्लूइड एक्जुटेट्स को कलेक्शन करके आम लैब को पठाई था से स्पाइरोचेट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आम देखी था लैबोरेटरी टेस्ट माध्यम. So first we do the collection of specimen, then the go to the microscopy, that is dark field examination. Already I have told that the dark field examinations we see the organisms in the against the dark background. The light scattered the specimens on the different angle through by opaque disc. Opaque disc मध्य लाइट गुड़ाक कौन हुए ना स्पेसिमेन उपर पड़ी थाए और डार्क बैकग्राउंड एग्नेस्ट रे आम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को विजुलाइज कर पारि थाउ, ताको हम डार्क फील्ड एग्जामिनेशन करि थाउ. देन द इन द माइक्रोस्कोपी डायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट. So in the direct fluorescent antibody test is a blood test. Okay, here we check the presence of antibodies, that is Treponema pallidum bacteria. So Treponema pallidum bacteria blood रे अच्छी कि नहीं से टेस्ट करने हम fluorescent temporal
टेम्पोनोमल एंटीबॉडी टेस्ट करिथाउ ओके here antibodies we know that antibodies are special proteins that is produced by the immune systems when harmful substance known as antigens include the virus fungi and bacteria enters the body this means the people who are infected with the syphilis will have the corresponding antibodies okay so that in the fluorescent temporal antibody test it is a blood test we detect the presence of the microorganism like the temporal pallidum okay temporal pallidum causes syphilis disease already we have know okay when antibodies will be produced when the harmful substance like the bacteria virus fungi bacteria these are known as antigens when into the body then the body produces their own antibodies okay so for that reasons the fluorescent temporal antibody test will be done here in that case the antibody is produced by the own self by the body okay so actually FDA ABS test actually does not check the syphilis infection it determine whether you have antibodies to the bacteria that cause it okay तो डायरेक्ट फ्लोरेसेंट आंटीबॉडी टेस्ट इट इज ब्लड यहाँ गोटे ब्लड टेस्ट जो कि आम टेपना पैलेटम बेटर अच्छी ना जापर साधारणतः आम जानी था आंटीबॉडी गुड़ाक केतले क्रिएट होते हैं जिते आम बॉडी भीतर को इन्फेक्शन बॉडी इन्फेक्शन होता है बैक्टेरिया भाइरस फंजी द्वारा एगुड़ाक आम आंटीजेन कही था से बॉडी निजर आंटीबॉडी तैयारी करता है तो एफटीए बेस टेस्ट साधारणतः आमर सिपिल चेक केवल सिकिल चेक कर न थाए यह कौन करें ना बॉडी रे किभली भाव आंटीबॉडी क्रिएट अच्छी कि ना सिपिल डिजीज होती आंटीबॉडी निहत क्रिएट हो तेणु तार मध्य आम डायरेक्ट फ्लोरेसेंट आंटीबॉडी टेस्ट करें then different type of serology test will be done for demonstration of antibodies in the patients who have the syphilis infections जो पेशेंट सिम्पल इन्फेक्शन होता है टेपनोमा पैलिडियम माध्यम जो बॉडी रे आंटीबॉडी तैयारी होता है से आंटीबॉडी को जानापी आम सेरोलॉजिकल टेस्ट करता है जब आंटीबॉडी क्रिएट होती जाना जे व्यक्ति को सिपिलिस डिजीज होती ओके so standard test are that is include Wasserman test Khan test Vidal test rapid plasma region test okay so first is the Wasserman test what is Wasserman test the Wasserman test कौन ना Wasserman test is an antibody test for syphilis and it is named why it is named that is the Wasserman test because the bacteriologist known as August Paul von Wasserman based on complement fixation okay so Wasserman test होची गोटे अगस्ट पावल von Wasserman का ना अनुसार Wasserman test होची कहीं ना it is a first blood test for syphilis okay इधर आम कौन करी थाउ first we collect the samples like blood CSA fluid okay and it will be and enter to the antigen like the cardiolipin that is will extract from the bovine muscle and heart सो गोटे आम कौन कर ना आम सीएस फ्लूइड जो व्यक्ति इनफेक्ट होती से सीएस फ्लूइड ब्लड कलेक्शन कर से कौन कर आंटीजेन लाइक द कार्डियोलिप्टिन आंटीजेन आम से एंटर कर से कार्डियोलिप्टिन कौट आसता है ना आमर बोभाइन मसल बा हार्ट और हार्ट रू से कार्डियोलिप्टिन आंटीजेन आसी थाए से आंटीजेन को कौन करता है आमर सैंपल जो इनफेक्टेड सैंपल सिपिल्स इनफेक्टेड सैंपल नहीं था ब्लड सीएस फ्लूइड से इंजेक्ट करि थाउ तापर से गोटे कंप्लीट फिक्सेशन होता है एवं से आंटीबॉडी क्रिएट होइछि कि नहीं जानी था ओके यदि आंटीबॉडी क्रिएट होइछि जानि जो सिपिल्स रिएक्शन सिपिल्स डिजीज होइछि ओके then come to the Khan test Khan test also is your type blood test it is a test for syphilis okay and it is based on the formation of precipitated in a mixture of serum and antigen जो serum नहीं था एवं जो antigen था तांका मित्र गोटे fixation होता है बा precipitation होता है से precipitation रे आमे कौन करता जानी था जे एथरे antibody डेभलप होइछि कि नहीं सिपिल्स जदि डिजीज होइतबो
आंटीबॉडी निहाती क्रिएट हम से आंटीबॉडी को देखिए आम जापर व्यक्ति को सिपिल्स होइछि ओके से सिपिल्स लेवल्स केमती अच्छी कौन सब जानी होता है सो खान टेस्ट ए सीरम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ सिपिल्स दैट इज नोन एज ऑल्सो खान रिएक्शन तो सीरम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है ताको आम खान रिएक्शन कही था एंड एथरे कौन हुए ना जो सेरम आंटीजन सहित मिसई था गोटे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन घटी थाए ओके आउ एथरे आम सिपिल्स टेस्ट करि थाउ ओके देन विडल टेस्ट करि थाउ रैपिड प्लाज्मा रीजन टेस्ट करि थाउ देन ट्रिपोनोमल टेस्ट यूजिंग ट्रिपोनोमल एंटीजन ओके ट्रिपोनोमल एंटीजन माध्यम हम ट्रिपोनोमल टेस्ट करि थाउ एग्जांपल सब देछि देखो ट्रिपोनोम पैलिडम इमुलेशन टेस्ट करि थाउ ट्रिपोनोम पैलिडम आग्रोन टेस्ट करि थाउ ट्रिपोनोम पैलिडम इम्यूनो एडहेरेंस टेस्ट करि थाउ फ्लोरेसेंट ट्रिपोनोम एंटीबॉडी टेस्ट होई थाए एवं ट्रिपोनोम पैलिडम हेमोग्लो टेस्ट माध्यम आम कौन कर सिपिल्स को आम डिटरमाइन करि थाउ जो एंटीबॉडी क्रिएट करि थाए पेशेंटर से एंटीबॉडी को आम देखि पारि थाउ ओके so see that ट्रिपोनोम पैलिडम इम्यूलाइजिंग टेस्ट एथरे कौन होता है ट्रिपोनोम पैलिडम इम्यूलेशन टेस्ट also a serological test okay for syphilis here we taken the solution that solution containing the living spirochaetes that is known as the Treponema pallidum when that solutions containing the living spirochaetes known as the Treponema pallidum that combined with the serum to the presence of the complete with the immolation of the active spirochaetes that is indicating a positive result तेतले आम जो सल्यूसन नहीं था से सल्यूसन जो लिविंग स्पाइरोचेट्स थाए एवं जिते ताकू आम कौन कर सेरम मिसई था से गोटे कौन हुए कम्प्लीट फिक्सेशन रिएक्शन होता है जोटा कि एक्टिव स्पाइरोचेट को इम्यूलेशन कर हेल्प करें एवं जानी था व्यक्ति को सिपिल्स होइछ ओके सो ताकू कहती ट्रिपोनोमा पैलिडम इम्यूलाइजिंग टेस्ट व्हेयर वी टेक द सॉल्यूशंस दैट कंटेन्स द ट्रिपोनम पैलिडम the spirochetes and it is combined with the serum okay and that really goes to the complete fixation reactions by which the spirochetes becomes inactivate or becomes immobilized that will indicate the positive result presence of सिपिल्स तो एथरे कौन है जो सेरम सॉल्यूशन नहीं था सॉल्यूशन सेरम सहित मिसई था सेरम सॉल्यूशन मिसई गोटे कंप्लीट फिक्सेशन रिएक्शन होता है एवं से कौन हुए ना बैक्टेरिया को इम्यूलेशन कर हेल्प करे एवं जेहेतु पॉजिटिव रिजल्ट मिले एथरे कौन रही ना स्पाइरोचेट्स बैक्टेरिया रही देन कम टू द ट्रिपोनोमा पैलिडम एग्लूटिनेशन टेस्ट तो एथरे कौन हुए पेशेंट serum will be mixed with the gelatin particle okay gelatin particle is a reagent and when patient serum will be mixed with the gelatin particle and it is a reagent there is a clump will be formed okay the all the bacteria cells will be clumped together and here will be confirmed that it is a positive for the सिपिल्स पेशेंट सीरम इज पॉजिटिव फॉर सिपिल्स जेतले आम कौन गोटे पेशेंट सीरम को लेकिन आम गोटे जिलेटिन पार्टिकल मिसई था जिलेटिन पार्टिकल से होची गोटे रिएजेंट तो मिसई सारापर कौन हुए से गोटे क्लम्प फॉर्मेशन हुए जाना पाए जे ये बैक्टेरिया सेल गुड़ाक गोटे टुगेदर होती पॉजिटिव रिजल्ट हो जाए व्यक्ति को सिपिल्स होती ओके देन कम टू द ट्रिपोनोम पैलिडम इम्यूनो एडहेरेंस टेस्ट इन ट्रिपोनोम पैलिडम इम्यूनो एडहेरेंस टेस्ट कौन हुए एथर पेशेंट सीरम कौन हुए ना सब ह्यूमन रेड ब्लड सेल सहित मिसी जाए ओके वो लगे आटाच होकर रही है से गोटे कंप्लीट फिक्सेशन रिएक्शन हुए तो कंप्लीट फिक्सेशन रिएक्शन कौन हुए पेशेंट सीरम से पेशेंट सीरम कौन हुए ह्यूमन रेड ब्लड सेल कौन हुए ना आधार होकर सब रही है
नॉर्मल सेरम रे टेपनो पालिडम केवल आधार होकर नए जो व्यक्ति सेफल होता है सिफिल्स होता है से व्यक्तिर सेरम रे कौन टेपनो पालिडम आधार आधारांश होकर रही है। तो ये टेस्ट टेपनो पालिडम इम्यून आधारांश टेस्ट रे कौन होता है आउ थे कही रखुच्छी सब टेपनो पालिडम सब कौन हुए ना व्यक्तिर आंटीबॉडी जो रही है जोटा आंटीबॉडी क्रिएट होता है जो सिपिल्स जदि हो बॉडी आंटीबॉडी तैयारी होता है से आंटीबॉडी सहित टेपनो पालिडम कौन होता है ना बहुत सेंसिटाइज होगी रही है। ओके तेणु से पेसेंटर सीरम को नहीं कौन करवा व्यक्तिर रेड ब्लड सेल जो मिसौचे से गोटे कंप्लीट फिक्सेशन रिएक्शन हुए और से आम सिपिल्स व्यक्ति होती नहीं जानी होता है। एथिरे गोटे मन रखा उचित जदि नॉर्मल सेरम जदि नौचे व्यक्ति जहाँ सिपिल्स धर न हो आम तो जानी क्या सिपिल्स हो न हो तो सिपिल्स होती कि नहीं तो जदि व्यक्तिर नॉर्मल सीरम को लेकिन देखिए टेस्ट करवा तो टेपनो पालिडम केवे ना व्यक्ति रेड ब्लड सेल सहित आटाच होकर रही आधारांश होकर रही जदि जो व्यक्तिर सिपिल्स हो से व्यक्तिर सीरम को जो आम मिस जो नॉर्मल रेड ब्लड सेल रखुचे तो नॉर्मल रेड ब्लड सेल कौन हुए ना से पेसेंट सीरमटा आधारांश होकर रही जाए। ओके तापर कंप्लीट फिक्सेशन रिएक्शन है तापर सिपिल्स होली आम जानी पारि। देन कम टू द टेपनो पालिडम हेमो एग्लूटेशन टेस्ट एथरे कौन हुए आम हेमो एग्लूटेशन मेथड माध्यम कौन हुए ना टेपनो पालिडम आंटीबॉडीज को डिटेक्ट कर पारि था। ओके जितने आम कौन कर ना व्हेन वी टेक द सेरम सैंपल इन्फेक्टेड विथ द सिपिल्स that will be taken and it will be placed in the disc what happen the cells aggregated on the surface of the disc। okay जिते कौन हुए ना आम सेरम सैंपल नहीं था जेकोसी व्यक्तिर सिपिल्स होती तो जदि आम सिपिल्स हो अनुमान कलु ताले ते भितर सिपिल्स होती नहीं कन्फर्म होगापाई विल कलेक्ट द सेरम सैंपल and when the serum sample will be placed on the disc the cells will be aggregated on the surface of disc will be see that cells are aggregate to the surface disc। तो जिते से सैंपल को लेकिन आम कौन करूँ ना उपके डिस्क रखी था से कौन हुए से डिस्क सरफेस आड़ को सबुतिक सेल आग्रिगेट होगी सेल सरफेस आड़ को पलि था से आम जाने व्यक्तिर सिपिल्स अच्छी। ओके then the treatment so for the patients who have the syphilis infection we give the benzathine penicillin G and alternative antibiotic agents like the doxycycline tetracycline ceftriaxone azithromycin these are the medications we give the patients for the proper treatment। then come to the prophylaxis what are the prevention we will advise to the patient do not will be the take the sexual contact with the infected persons use the use of the physical barrier like the condoms etc and also we will advise to the patient use the antiseptic like the potassium permanent or antibiotics। okay thank you the Spirochaetes is over। then come the leptospira always so the Spirochaetes is over then leptospira also is a gram negative bacteria after it is a tightly coiled okay and very flexible with the character and they have the hook end। okay that means the bacteria has the a curved or angular piece okay and is very thin flexible and very tightly coiled size about the 5 to 15 into 0.1 to 0. micrometer and it is very also motile and it has there is no spore no capsule and this is divided into two species like L interrogans and L biflexa and it will be grows in the enriched media where the medium contains the like the blood serum sea blood agar okay enriched media also help to the support the growth of the microorganisms। okay
and it is aerobic that will be grows on the presence of oxygens, and microaerobic also. They also be require the little free oxygens and the in the lower atoms pressure also, and these are very affected against the heat, acidic pH and bile acidic pH heat very affected होई पारतांदी. Okay, here wild rat is an important reservoir by which the infections goes across. Okay, and human results why human infections occurs when the persons will direct contact with the urine and stool of the infected animals. Okay, and urine contact water ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରେ ନା ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଆନିମଲ୍କୁ ଲେପ୍ଟୋସ୍ପାଇରା ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି ତାକୁ ଲେପ୍ଟୋସ୍ପାଇରୋସିସ୍ କହନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯଦି ୟୁରିନ୍ କି ବି ତା'ର ୟୁରିନ୍ କି ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍ ୟୁରିନ୍ କି ଯେତେବେଳେ ଟଚ୍ କରିଥାଏ ସେତେବେଳେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଲେପ୍ଟୋସ୍ପାଇରୋସିସ୍ ହୋଇଥାଏ. ଓକେ, କିଭଳି ଭାବରେ ମାଇକ୍ରୋଅର୍ଗାନିଜମ୍ ବଡ଼ିକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥାଏ ନା ଥ୍ରୁ ବାଇ ଦ ଆବ୍ରେଡେଡ୍ ସ୍କିନ୍ ଅର୍ କଟ୍ ସ୍କିନ୍ ଦ ମାଇକ୍ରୋଅର୍ଗାନିଜମ୍ ଏଣ୍ଟର୍ ଟୁ ଦ ବଡ଼ି. ଓକେ, then come to the laboratory diagnosis. First we collect the specimens like the blood, urine and CSF. Then we go to the dark field microscopy. Okay, then do the culture. They will be properly grow on the special media. Okay, special media that is like the enriched media or the selective media or differential media. Different media there is special media, or in the special media they will properly grow. Then would here also do the animal inoculations. Okay, what is inoculation? Inoculation is also introducing microorganism into the culture when they can grow and reproduce. Okay, so in the animal inoculation what happen? Animal inoculation is more sensitive than the culture in the isolation purpose. So okay, specimen is inoculated in the intraperitoneal in hamster, genuine pig and leptospira demonstrated by the peritoneal fluid. Okay, and many other organs after death 18 to 15 days. So in the animal inoculation କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ସ୍ପେସିମେନ୍ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗୁଇନା ପିଗ୍ ବା ହାମଷ୍ଟରରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟ୍ରା ପେରିଟୋନିଆଲି ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରେ ନା ସ୍ପେସିମେନ୍କୁ ଏଣ୍ଟର କରିଥାଉ. ଓକେ, ଏଣ୍ଟର କରିସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେଥିରେ ପେରିଟୋନିଆଲ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ଆମେ ଲେପ୍ଟୋସ୍ପାଇରା ଅଛି କି ନାହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜାଣିପାରିଥାଉ. ହେଲା, ତ ସେରୋଲୋଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ କରିଥାଉ ନା ପୁଣି କହୁଛି ଇନୋକୁଲେସନ୍ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସ୍ପେସିମେନ୍କୁ ନେଇକି ଅନ୍ୟ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ରେ ଆମେ ଏଣ୍ଟର କରିବା ତାକୁ ଇନୋକୁଲେସନ୍ କହନ୍ତି. ତ ଆନିମଲ୍ ଇନୋକୁଲେସନ୍ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସ୍ପେସିମେନ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ନା ସ୍ପେସିମେନ୍କୁ ଆମେ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ପେସିମେନ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ଆମେ ଗୁଇନା ପିଗ୍ ବା ହାମଷ୍ଟରରେ ଆମେ ଇଣ୍ଟରପେରିଟୋନିଆଲି ଏଣ୍ଟର କରିଥାଉ, ଇନସର୍ଟ କରିଥାଉ. ତାପରେ କ'ଣ କରିଥାଉ ନା ସେ ପେରିଟୋନିଆଲ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍କୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ଲ୍ୟାବ୍ ପଠାଇଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଥାଉ ଯେ ସେଥିରେ ଲେପ୍ଟୋସ୍ପାଇରା ଅଛି କି ନାହିଁ. ଦେନ୍ ସେରୋଲୋଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ସେରୋଲୋଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ଆମେ କରିଥାଉ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପି ଆଗ୍ନୋ ଟେଷ୍ଟ କରିଥାଉ. ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଫ୍ଲୁorescent ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା କରିଥାଉ କହିଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯଦି ଲେପ୍ଟୋସ୍ପାଇରୋସିସ୍ ହେଇଛି ତ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ବଡ଼ିର ଯେଉଁ ଓନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଥିବ ତ ସେଥିରେ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଥାଏ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଲେପ୍ଟୋସ୍ପାଇରୋସିସ୍ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ. ଏବଂ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଫିକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଲେପ୍ଟୋସ୍ପାଇରୋସିସ୍ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଜାଣି ହୋଇଥାଏ. ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଆମେ ପେନିସିଲିନ୍ ବା ଟେଟ୍ରାସାଇକ୍ଲିନ୍ସ ଦେଇଥାଉ ଏବଂ ଡକ୍ସିସାଇକ୍ଲିନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଉ. ଓକେ, ରିପେଟିଭ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲେସନ୍ରେ ଡକ୍ସିସାଇକ୍ଲିନ୍ ଦେଇଥାଉ. ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ. ସୋ leptospirosis or leptospiral is over. Okay, ପାଥୋଜେନିସିରେ ଲେପ୍ଟୋସ୍ପାଇରୋସିସ୍ର ପାଥୋଜେନେସିସ୍ କ'ଣ ରହିଛି ନା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦଣ୍ଡିସ୍ ହୋଇଥାଏ, ପ୍ରୋଟିନ୍ ୟୁରିଆ ହୋଇଥାଏ. ଓକେ, ଦଣ୍ଡିସ୍ ହେଲା କ'ଣ ଏଲୋସି ବା ଏଲୋସି ପିଗମେଣ୍ଟେସନ୍ ସ୍କିନ୍ ଟିସ୍ୟୁ, ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରୋଟିନ୍ ୟୁରିଆ ହୋଇଥାଏ, ଏକ୍ସେସ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ୟୁରିନ୍ରେ ରହିଥାଏ. ଓକେ,
यूरिन रे एक्सेस प्रोटीन हो जाए ताको कहते प्रोटीनूरिया दंडिस व्यक्ति को होता है एवं व्यक्ति को हेपाटोरेनाल होता है व्यक्तिर किडनी फेल्योर हो जाता है ओके कहीं होता है ना व्यक्ति को लेप्टोस्पाइरल एट्रोहेमोरेजिका एंट्री करें से व्यक्तिर विभिन्न प्रकार डिजीज होता है ओके लेप्टोस्पाइरल एट्रोहेमोरेजिक इज ए थिन स्पाइरल शेप्ड लेप्टोस्पाइरल बैक्टीरिया ता मध्य व्यक्ति को विभिन्न प्रकार डिजीज होता है एवं व्यक्ति को हेपाटोरेनाल होता है दंडिस होता है प्रोटीनूरिया होता है एवं व्यक्तिर मध्य हाई फीवर होता है हेडाक होता है चिल्स होता है मसल आच होता है वोमिटिंग होता है व्यक्तिर आई रेड हो जाता है व्यक्ति को व्यक्तिर एब्डोमिनल पेन होता है यह हूँ पैथोजेनेसिस ओके ट्रीटमेंट कहली पैथोजेनेसिस ओवर ओके तो सेरोलॉजी टेस्ट पुणी कहूँ माइक्रोस्कोपी आग्रोन टेस्ट होता है आग्रोन टेस्ट कौन ना गोटे जो एंटी लेप्टोस्पाइरा एंटीबॉडीज इन दिस सैंपल्स आर डिटेक्टेड यूजिंग द माइक्रोस्कोपिकल टेस्ट जो एंटी लेप्टोस्पाइरल एंटीबॉडीज को जानापी कही माइक्रोस्कोपिकल टेस्ट कराई ओके इंडिरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट कौन हुए स्पेसिफिक एंटीबॉडी गुड़ाक जानापी इंडिरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट कराए कही एवं कम्प्लीट फिक्सेशन टेस्ट कौन है ना जो व्यक्तिर ब्लड सीरम आम नहीं था से हूँ गोटे गोटे सब एंटीजेन ये एंटीजेन मध्य आम कौन कर टेस्ट मध्यम एंटीबॉडी व्यक्तिर प्रेजेंस अच्छी कि ना जो एंटीजेन नहीं था बॉडी एंटीबॉडी अच्छी तो रिएक्शन घटी थाए ओके तो कहते एंटीजेन एंटीबॉडी कम्प्लीसन होता है आम साधारणतः व्यक्तिर ब्लड सैंपल नहीं था ओके जदि कौन से एंटीजेन हिस्से मिसई था गोटे रिएक्शन होता है कम्प्लीट फिक्सेशन टेस्ट रिएक्शन करता है मध्यम आम लेप्टोस्पाइरस अच्छी कि ना जापर था लेप्टोस्पाइरोसिस कौन गोटे हूँ ब्लड इन्फेक्शन ताहा बैक्टेरिया लेप्टोस्पाइरा मध्यम होता है ओके थैंक यू।